मान के चलो इधर के लोग से मेरे को बहुत ज़्यादा नफरत है। इधर के लोग का कहना था कि लड़की है, उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसा भी होता है कि आपको जीन्स पहनने पे भी रोक है, ये पहनने पे रोक है। 20-year-old Anchal Kumari is a college sophomore working towards an ambitious dream. मैम मैं सुबह 4 बजे अपने घर से निकलती हूँ ट्रेनिंग के लिए। मेरे को ऑटो लेके जाना पड़ता है। मिनिमम मेरे को 1.5 घंटे लगते हैं अगर ट्रैफिक ना मिले तो। Her grueling daily routine is not uncommon among young men and women in Bihar, one of India's most impoverished and underdeveloped states, particularly for those pursuing a quite specific career goal. मैम ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो बहुत दूर दूर से वो लोग आए हैं। कोई जहानाबाद, वैशाली, इधर रूम लेके रहते हैं या फिर हॉस्टल लेके रहते हैं। Anchal isn't training to be a champion athlete. She's after only the most coveted type of job in India, a government job, guaranteeing security and prestige in an uncertain job market. चलिए 2 लाइन बनाइए आगे लड़का लोग जल्दी। चलिए कवर करो, चलो गर्ल्स। मैं 2004 में पटना आया था। फिर मैं 2019 लास्ट में एकेडमी ओपन किया, गांधी मैदान में मैं एकेडमी ओपन किया। फिर मैं उसमें अपना मेनली रूप से एकेडमी ओपन करने के बाद मेरे पास मुश्किल से 20 से 25 बच्चे थे, जिसमें 10 बच्चे टोटल मेरिट पास किए फिजिकल क्वालिफाई होने के बाद। फिर देन वो सिलसिला बढ़ते गया। एज ओ कोच अच्छा मैं गाइडलाइंस बच्चे लोग के दिया, बच्चे आने लगा, साथ में रनिंग करवाया। Neeraj Kumar once aspired to join the army but failed despite multiple attempts. He now coaches, preparing trainees to meet rigorous fitness standards required for army and police positions. To say the selection is competitive is an understatement. जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस का मान लेते बच्चे तैयारी कर रहे हैं। 21,391 सीट के लिए जो बच्चा अप्लाई किया, लमसम 18 लाख बच्चा एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसमें 5 गुना वो रिजल्ट एक्स्ट्रा आएगा। 21,000 का 5 गुना आप कर दीजिए, उतना रिजल्ट आएगा। उसमें से बच्चे सभी को फाइट करके सिर्फ 21,391 बच्चा ज्वाइन कर पाएंगे। एक सीट पे मान लीजिए अगर 5 बच्चा मैम फाइट कर रहा है तो ज़्यादा टफ हो जाती है। कुछ गर्ल्स तो गिर जाती थी क्योंकि डायरेक्ट धूप हमारे फेस पे आती थी। फिर उसके वजह से ऐसा भी होता है कि हमें फीवर तक भी लग जाती है। फिर भी मेडिसिन खा के कल वापस ग्राउंड पे जाना है, तो किसी भी तरह जाना है। This would be Anchal's third attempt to land a job in the defense sector. Besides training her fitness, she crams for a notoriously difficult written exam. एग्ज़ाम में मुझे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज़ लगता है तो वो रिटन। इतनी बुक्स पढ़ो, इतनी मेहनत करो, और जब नहीं होता तो फिर एक एक फुल स्टॉप, एक एक कॉमा इतनी बारीकी से पढ़ना पड़ता है कि कुछ छूट ना जाए। ऐसा लगता है जैसे मानो पूरा दुनिया ही ख़त्म हो गया। Anchal and her family had to defy societal norms in their village for her to pursue her dream. मेरे खुद के अंकल ने बोला कि घर में रहेगी, सिलाई करेगी, ये करेगी। मेरे पापा ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, जब इसका मन है तो इसको करने देते हैं। कि नहीं लड़के है मत पढ़ाओ, ऐसे है बहाक जाएगी, बाहर जाएगी तो ऐसे होगा, गलत लाइन रास्ता है। बहुत खुश है। हम चाह भी कि भगवान करे कि एकरा मतलब वर्दी चढ़ जाए देख कर। आ जो मेहनत करते ओकरे न चढ़ते, क्या कर भैया कैलथिन मेहनत। हाँ बस 2025 लास्ट होते होते जॉब ले लूँगी पक्का, ये प्रॉमिस है मेरा खुद से भी और सबसे भी।
Millions of young Indians compete for jobs with the government, far outnumbering the number of vacancies. Only 1 to 3% of all applicants ultimately succeed in securing a position. 4 years ago, 26-year-old Prem Prakash Sudha moved to Bihar's capital, Patna, to take his shot. He comes from a family of farmers. हम लोग के बिहार में कहावत है, परिवार में कहावत है गांव में कि एक बार जब एक आदमी का जब सरकारी नौकरी हो जाता है ना, तो 4 जनरेशन को जो है कोई दिक्कत नहीं होता है। आज भी हम लोग के गांव में जाइएगा तो वहाँ पे बहुत सारी गरीबी है। मैं अपने गांव का पहला लड़का हूँ जो पटना पढ़ने के लिए आया हूँ। हम अपने परिवार के पहला ऐसा लड़का है जो कि ग्रेजुएशन कर पाए, MA कर पाए। इसके पहले यहाँ तक कि मेरे पिताजी मैट्रिक पास नहीं हैं। We are now finding that across the board, everybody wants a government job. Across the board, that is among the very highly skilled professionals down to the completely unskilled basic migrants. Everybody is looking for a government job because even when it's very low paid, even when it's very unskilled, it provides security. We have a historical legacy of this. It pays much higher than the private sector job. Sometimes the difference can be 2 to 3 times or more. Second, it has much more job security compared to a private sector job where you can be fired mostly any time. Third, there are benefits of various kinds, including pension. These are the visible kinds of things. And then there's, of course, more intangible things like the prestige of a government job and its value in the marriage market. So all of this together builds into a package of making this job very attractive. ये मेरा रूम है। मैं 2.5 साल से रह रहा हूँ। सेल्फ स्टडी यहीं करता हूँ। बाकी अगल बगल भी स्टूडेंट रहते हैं जो कि सेल्फ स्टडी करते हैं। दिक्कतें होती है कि कम स्पेस में इतना छोटा सा रूम है, इसी में हम लोग को रहना, खाना, पीना। अगर इससे बड़ा रूम हम लोग लेने का प्रयास करेंगे या लेने चाहेंगे तो इसका बजट ज़्यादा हो जाएगा। 5,000-6,000 रुपये बजट हो जाएगा। 5,000-6,000 बजट पूरा करना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही टफ काम होता है। जब वो 6,000 रुपये बजट ही देगा, उसके घर से ही 5-6 हज़ार रुपये आता है। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि अंदर से जो है शर्म लगता है कि पिताजी से क्या कहें। पैसा के लिए बोले कि ना बोले, पैसा है नहीं। Prem has sat for a total of 4 exams for different government jobs over the 4 years since he moved to Patna. It's the norm in the highly competitive market for government jobs. या हुआ भी, एग्ज़ाम देने के बाद पता चला कि एग्ज़ाम दे के आए, बढ़िया से तैयारी करके गए हुए थे, अच्छा से एग्ज़ाम दिए, पता चला कि पेपर ही उसका लीक हो गया। इस समय बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि इस सिचुएशन को झेल नहीं पाते, इस समय को झेल नहीं पाते हैं। मेंटली प्रेशर आ जाता है उन पर। डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं कि खुदकुशी भी कर लेते हैं। The obsession with government jobs has created an exam culture among young Indians. जो फर्स्ट लेवल का एग्जाम होता है उसका सेट चलाया जा रहा है, ठीक है। It drives many educated youths away from productive sectors, leading to an over-reporting of unemployment figures in India. The unemployment rate is most likely driven up by people choosing to study for competitive exams and not join the private sector straight away. I think that is most likely true. Again, it's very hard to get concrete evidence of this. Now, what are they doing? They are choosing to remain out of the workforce, study in the hope of getting the job. So they show up as unemployed. Is this genuine unemployment? Now, that's a hard question to answer. But if by genuine unemployment we mean there are simply no jobs available, that's not strictly true. They could find a job, but it's likely going to be much less desirable job than what they expect. इसमें एग्ज़ाम जो है कि
गलत तरीका से लिया जाता है, उसका क्वेश्चन आउट हो जाता है, फिर टाइम पर एग्जाम नहीं हो पाता, जिससे होता है कि दिन प्रतिदिन समय बढ़ता जाता है और विद्यार्थी या स्टूडेंट को जो है कि समय 1 साल नहीं 2 साल नहीं 10 साल 5 साल इस तरह समय ज़्यादा लगता जाता है, इससे लाइफ बर्बाद हो जाता है। मेरा तो 6-7 युवा इसी चलते जो है मारे फिर रहे हैं, बेरोजगार फिर रहे हैं। भैया के जैसे कि उम्र हो गया अभी 32 साल बता रहे हैं, ऐसा ही 32 साल 35 साल तक लोग लगा रहता है। 35 साल जो आदमी अपनी ज़िंदगी का दे देगा, अपना जवानी बर्बाद कर देगा। सोचिए अगर उसको नौकरी नहीं हुआ, उसको कहीं जॉब नहीं मिला तो वो आदमी क्या करेगा। Prem is making a rare trip back home to celebrate a festival with his family. देखिए, मोटिवेशन का कारण जो होता है सबसे बड़ा यही होता है कि परिवार को आगे बढ़ाना कैसे है। परिवार में डेवलपमेंट आएगा कैसे, सारे लोगों को शिक्षा मिलेगा कैसे, सबकी ज़रूरतें पूरी होगी कैसे, मम्मी का इलाज होगा कैसे, जो बहन जिसका शादी नहीं हुआ है उसका शादी होगा कैसे। While Prem is primarily focused on securing a government job, he has also considered alternative career paths. तो मेरा यही एम है कि अगर नहीं हुआ तो मेरे अंदर, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं पत्रकारिता में उतर जाऊँगा, जर्नलिज्म में उतर जाऊँगा। मैं पत्रकारिता करना शुरू कर दूँगा। यूट्यूब पर मेरा चैनल भी चलता है एक। आज के डेट में तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का ज़माना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सवाल जो हैं जो जीके पोर्शन के हैं इससे पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में देखा जाए तो इसमें और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें कोई भी आदमी चाहे तो अपना कैरियर जो है बना सकता है मेहनत करके। 220 million people applied for government jobs between 2014 and 2022. Only 722,000 were selected. Many landed those jobs after repeated attempts. For every 1,000 applicants, only about 3 were recommended for appointment. "24-year-old Neetu Yadav is a mother of 2 from Varanasi, Uttar Pradesh. Despite marrying young, she managed to complete her university education after marriage. She and her husband moved to Bangrola, Gurgaon, near Delhi, in search of work. Now, Neetu works at a factory producing educational games. 1 साल से काम कर रही हूँ। वहाँ पे पैकिंग भी करती हूँ, क्वालिटी भी करती हूँ, लाइन पे भी लग जाती हूँ, रिटर्न भी करती हूँ। मजबूरी से जाती हूँ, काम करती हूँ 8 घंटे। 8 घंटे काम करने के बाद हमें 1 महीना काम कर लूँगी, महीने पे पेमेंट आ जाता है। मैं दे भी लेती हूँ सबका, अपना खर्चा भी चला लेती हूँ और बच्चों का भी कर लेती हूँ। हमारे हाथ में पैसा है, कहीं भी लगेगा तो नहीं पैसा रहता है, किसी मतलब पति के सहारे हैं तो पैसा देना, एक काम करना है। Neetu's journey reflects a broader trend in India. More women are breaking into India's male-dominated factories. Yet, as the nation's economy surges, manufacturing struggles to keep pace. It has been 10 years for Indian reforms, but the share of the manufacturing sector in India's employment is barely about 14% or 13%. The policy reforms that happened did not really enable this sector to become competitive. Let's say until the latest efforts, which are in the form of Make in India or production linked incentives, and the new policies have also not had the kind of effect that we really wished for. Right? So that really raises the question, why have so many attempts at stimulating Indian manufacturing and doing policy reforms not been successful?
India needs to expand its domestic workforce in many sectors to meet its goal of being a $7 trillion economy by 2030. That could mean getting even more women employed in conventionally male-dominated sectors. इंडस्ट्री में एक नॉर्म्स है कि अच्छा फैक्ट्रीज़ में ज़्यादातर मेल स्टाफ है, तो वी वेर ऑल्सो हैविंग मेल स्टाफ इन आवर फैक्ट्री. इन 2016 वी हैड अराउंड 5 or 6 female staff and 35 to 36 male staff. At that point of time our company was very small, but gradually we learned through our data ki what is our production and how each employee has been contributing to us. So we figured it out ki female staffs are more capable and doing much better things than the male staff. So we started investing in female staff. So currently we have around 55 to 60 approximately female staff. At the production level, at the QC level, we have more female staff than the male staff, and that helps in your increasing productivity in our factory. And one more thing जो कि मोरल कंपास में इनिशियली से था कि यार बच्चों के लिए कुछ बना रहे हैं, एंड हमारे सोसाइटी में ये पहले से कि फीमेल्स आर बेस्ट पर्सन टू टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड, कि यार जब तक कि फ़ीमेल की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी इस चीज़ में तब तक हम बेस्ट चीज़ उनके लिए नहीं ला सकते. India is currently experiencing a period of high growth, ranking among the world's fastest growing major economies despite global challenges. But high growth hasn't produced more employment, especially for women. You know what is really terrifying about India? We always had a low worker to population ratio, that is employment. For men it was between 55 and 60%. For women it was between 25 and 35%. Very low, right? What is really striking is that in the last 2 decades it has fallen. It's gone down. So we are now in a situation where women's work participation has fallen to levels like 17-18%. That's crazy. It doesn't mean that they're not working. They are working. They're not getting paid for it. Women are still seen in many households as supplementary earners. So they work when there's a need and they don't when there isn't. So when economic growth was high and household incomes rose, women actually stopped working. And that created a inverse relationship between growth and employment. India has made ambitious plans to boost its manufacturing sector. The target for manufacturing to contribute 25% to GDP, up from 16% today. It's a major job creator, meaning more opportunities for women to earn income and contribute to the economy. But in India, women encounter some challenges in the workplace. Safety concerns, lack of proper facilities, and gender discrimination are some issues that Smartivity has been addressing. कंपनी के लिए माहौल लड़कियों के लिए अच्छा है, क्योंकि उसमें सही से तरीके से बोलते भी हैं. कंपनी में HR मैडम हैं, लेडीज़ हैं. अगर कोई भी परेशानी हो तो उनको डायरेक्ट जाके हम कह देते हैं अपना कि नहीं मैम ऐसी बात है. वहाँ पे औरत के लिए सेफ़ है. सेफ़ ये है कि कोई भी बात हो, अगर आपको कोई मतलब कि टॉर्चर कर रहा है, कोई बोली दे रहा है, आपको कोई कुछ गलत व्यवहार सोच रहा है, दिमाग में गलत नज़र से देख रहा है, कोई भी बात तुरंत वहाँ पे जाके मैम से बोल दो. उसके लिए वो अपना कर देती हैं कार्रवाई जो करना है. हाँ, लड़कियाँ सब तो ये सोचते हैं कि चलो यहाँ पे सही है, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं. मैं शौक के लिए नहीं कर रही हूँ. मैं तो अभी भी सोचती हूँ कि कोई अच्छा काम मेरे पति को मिल जाए, हम सबका दे लें जिसका हम लिए हैं, उसके बाद हम अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए. हमें ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए अभी 2-4 साल काम करना पड़ेगा. सीख लेंगे अपना ये काम, अपना खुद का काम कर लेंगे. काम कर लेंगे तो अपना घर पे काम, अपना घर भी संभाल लूँगी और मैं काम भी कर लूँगी. क्या कर रही?
A growing movement has emerged of Indian women seeking empowerment and self-reliance through entrepreneurship. ड्राइविंग से पहले मैं ऑफिस वर्क करती थी, तो ऑफिस वर्क एक्चुअली मैंने काफ़ी जल्दी स्टार्ट कर दिया था। घर में पर्सनल प्रॉब्लम्स थी। Aarti Singh left school at 15 when her mother died. As the eldest child of estranged parents, she became the sole provider for her siblings. Aarti worked as a tailor, call center operator and courier before deciding to take driving lessons paid for by an NGO supporting women in need. तो उनका ये कॉन्सेप्ट था कि वो खुद ही ड्राइविंग सिखाएंगी और खुद ही जॉब देंगी, और साथ में उनका ये भी था कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि मतलब कोशिश क्या मतलब वो 100% ये श्योरिटी लेते थे कि हम आपको जहाँ पे भी जॉब देंगे वो फीमेल के लिए ही देंगे, मतलब आप जिसकी भी गाड़ी चलाओगे आप फीमेल के लिए चलाओगे। तो मैंने बोला चलो ये तो ठीक है। Aarti soon progressed from being a cab driver to launching her own taxi service, catered exclusively for women. A godsend for Indian women traveling solo, especially on long cross-country journeys. तो फिर उन्होंने जैसे कि कुछ फीमेल ही थी, उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने बारे में बताया कि एक्चुअली हम लोग जैसे कि मीटिंग्स के लिए जाते हैं कई बार, मतलब जैसे जयपुर हो गया, आगरा हो गया, आउट ऑफ स्टेशन मीटिंग्स के लिए जाते हैं, तो ज़्यादातर क्या होते हैं कि हमें कैब करके ही जानी पड़ती है। फ़्लाइट का ये होता है कभी मिलते कभी नहीं मिलते, तो हमारा मतलब यही होता है। तो कहते हैं कि हमें ना अनसेफ लगता है, हम पूरे रास्ते सोते नहीं हैं क्योंकि हमारे साथ एक मेल ड्राइवर जा रहा है, हमें अलर्ट रह के बैठे रहना पड़ता है। गलती से नींद आ गई तो डर लगता है कहीं ड्राइवर कहीं और जगह ना ले जाए। But starting the business wasn't easy, especially when it came to financing. तो मैंने लोन्स वगैरह के लिए वैसे ट्राई किया था, बट इंटरेस्ट की वजह से मैं लोन नहीं ले पा रही थी। इंटरेस्ट काफ़ी हाई मिल रहा था कि भाई इतना देना पड़ेगा। जैसे कि जब लोन लेने के लिए ट्राई कर रहे थे, उनको डर ये रहता है बैंक वालों को या किसी से भी, हम प्राइवेट फाइनेंस से भी लोन लेते हैं, तो आप फीमेल आप पैसे कैसे पे करोगे, तो वो सजेस्ट कर देते हैं कि आप अपने हस्बैंड के नाम पे ले लो, फादर के नाम पे ले लो, भाई के नाम पे ले लो, मतलब पर्सन सिक्योरिटी के तौर पे आप अपने हस्बैंड का नाम दे दो। Aarti turned to Mahila Money, a new digital financial services platform offering microloans. It's focused on helping women who are typically underserved by conventional financial institutions. Founder of Mahila Money, Seri Chahal, is a prominent entrepreneur who has dedicated much of her career to empowering women through technology and financial inclusion. Mahila Money is a very new company, and we already have 1 million users who have come from all parts of the country. 4,000 locations, 1 million users. If we were a physical bank, it would take us a decade to get there, maybe more. So it's a whole chain that we have created. It's an ecosystem, and the focus is very simple: that we'll continue to serve women till as long as we exist. मैंने इनसे लोन लिया, मैंने अपनी गाड़ी ली और गाड़ी लेके फिर मैंने अपना ट्रेनर का काम शुरू किया। Aarti trained other women to be taxi drivers. Now she's built a network of drivers catering to a female clientele. मैं देखती हूँ कि इन फ्यूचर हमारे इंडिया में इतने फीमेल ड्राइवर होंगे ना, इतने फीमेल ड्राइवर, कि तब आपको किसी ऐप पे या किसी साइट पे जाके उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप एक कॉल करोगे कि मुझे एक फीमेल ड्राइवर चाहिए और आ जाओ बस आप, और हम पहुंच जाएं। मेरा वो फ्यूचर है। मैं चाहती नहीं हूँ कि हम वहीं तक रह जाएं। अभी स्टार्टअप को आगे बढ़ने में कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता, बट हाँ कि मतलब ये मेरा सपना है और मैं ये देखना भी चाहती हूँ। Empowering women entrepreneurs could create up to 170 million jobs. Currently, women own just 12.9 million of India's 63 million micro, small and medium enterprises.
29-year-old Akash Babu hails from a farming family in the agricultural heartlands of Uttar Pradesh in northern India. तो एजी लाइन से मैंने फिर मेरी इच्छा हुई थी, मान लो ग्रेजुएशन जब ज्वाइन की तो मैंने कहा एग्रीकल्चर लाइन में अच्छा पैसा है, प्राइवेट सेक्टर में भी है और गवर्नमेंट में भी है और सिलेक्शन इसमें बहुत जल्दी होती है। उस टाइम होते थे 2014 के समथिंग में 15 समथिंग, उस टाइम बहुत अच्छी मतलब वैकेंसी निकलती थी और सिलेक्शन भी होता था। But that was not to be. Akash has been in Delhi for 6 years now, waiting for the elusive job he's been trained for. He had entered a job market that appeared to have little room for his knowledge and expertise. Akash has since joined the ranks of a growing army of gig economy workers in India, numbering almost 10 million, a million of whom are in Delhi alone. मैं प्रेजेंट टाइम बिग बास्केट में काम करता हूँ, जिसमें ऑर्डर डिलीवर करने पड़ते हैं, जिसमें ग्रोसरी का सामान आता है, दूध और कई आइटम आते हैं, दूसरे मतलब राशन का टोटल सामान आता है। We were supposed to have a demographic dividend. That's becoming, in fact, a demographic disaster now because we cannot find jobs for all the young people who are coming into the labor market. We are educating more and more of them. Many of our young people are going into very expensive tertiary education. You know, they are selling land, going into debt, so as to get these higher degrees. And yet there are no jobs when they come out of this process. So it's a huge problem. What we have are the aggregate numbers. We know 40% of fresh college grads are jobless. But we don't understand why this number is so high really very well. Right? So what we know is that people with college education leave college and they don't immediately get into the workforce. Now, is it because they are holding out for opportunities that they think are consistent with their training and education? So they have certain aspirational ideas, right? That I need a job of paying at least so much or in this place, etc. So are they waiting for such jobs to become available? There are workers somewhere, there are jobs somewhere else, but we haven't figured out how to match them very well. मेरे बाप ने इतनी मेहनत से पढ़ाया है, इतना कुछ करके पढ़ाया, तो मुझे कुछ करना चाहिए हटके। यही सोचकर मैं तब से भटकता रहा कंपनियों में। एक दो कंपनी इधर उधर से ज्वाइन की तो उधर से निकला इधर से निकला इधर। कोई कंपनी मुझे सही जिसमें मनी फ्रीडम हो या टाइम फ्रीडम हो, ऐसी कंपनी मुझे कोई नहीं मिली। सबसे ज़्यादा मैं ही एजुकेटेड हूँ, जो कि ग्रेजुएट भी हूँ और प्लस में कंप्यूटर कोर्सेज भी हैं, मतलब हर चीज़ की मुझको नॉलेज है। नहीं, मैंने तब नहीं सोचा था लाइफ में कभी कि मुझे ये काम करना पड़ेगा। India has one of the fastest growing gig economies in the world. One report suggests that by 2030, it would contribute 2.5% to the country's GDP and hire 23.5 million Indians, almost 3 times the number now. The gig economy, for example, comes in quite a, people mention it a lot when they talk about young people and employment, but the way it has turned out over the last few years, these are not aspirational jobs. They are hard jobs, you are out a lot on the streets, but we are still finding people with higher education coming in here for lack of jobs. Akash works 12 to 15-hour shifts daily. फील्ड पे चलता हूँ, धूप डस्ट या गर्मियों का टाइम है तो धूप बहुत सहन करनी पड़ती है। दोपहर का टाइम होता है होती है धूप, या बारिश का टाइम है तो बारिश में भीगना पड़ता है, बारिश में ऑर्डर मारने पड़ते हैं। राइडर हर जगह बढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा अब इसमें भी काम नहीं निकल रहा है। Gig workers in India aren't protected by labor laws, making them vulnerable to job losses and irregular income. They often lack basic protections like minimum wage guarantees, health insurance, and don't get paid leave. तो ये कंपनी अपना बेनिफिट देखती है, राइडर कुछ भी बचे या ना बचे, क्योंकि वो तो यही कहती है तुम्हें काम करना तो करो, नहीं तो जाओ। तो शादी इसके लिए इसमें बहुत दिक्कत समस्याएं हैं ना, इसीलिए छोड़ना चाहता हूँ। शरीर
पूरा ख़राब हो चुका है, शक्ल मान लो, चेहरा, कुछ भी मान लो। अच्छा से नहीं लगता, इसमें समय नहीं मिलता, खाने का टाइमिंग नहीं है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, क्योंकि खाने के टाइम सही नहीं है, शरीर पे फ़र्क पड़ता है और घर पे भेज जाता हूँ। घर वालों को पता नहीं, बताता ही नहीं मैं ये काम करता हूँ या इतनी परेशानी होती है मुझे, ये बात मैं घर वालों को शेयर नहीं करता कोई भी, क्योंकि याद आने लगती है। तो उनसे बात इसी मकसद से नहीं करता हूँ, बात करूँगा तो घर जाना पड़ेगा। Akash bides his time in the gig economy. He's saving up to realize his dream to open a photo studio or cafe back in his village. Elsewhere in India's most central state, Madhya Pradesh, one villager has found fulfilling employment without having to leave home. Akash Chaurasia chose to be a farmer, just like his father and generations before him. It's the most typical of occupations here, but climate change and depleting groundwater have rendered farms less productive than before. Akash had very different career aspirations as a child. बचपन से मेरा मन था कि मैं डॉक्टर बन के लोगों की सेहत का इलाज करूं, लेकिन जब अस्पतालों से जुड़ने का मौका मिला तब जाके और मुझे लगा कि मैं डॉक्टर बन के लोगों की बीमारी को ठीक कर सकता हूं, लेकिन बीमार होने के कारण को ठीक नहीं कर सकता। तो मेरा मन बदला और मैंने किसानी करने का मन बनाया कि मैं डॉक्टर ना बन के किसान बन के लोगों को बीमार होने से रोकूंगा। Akash's decision to pursue farming used to be unconventional for people his age. Recently, more young Indians are entering the sector, driven by the rise in agri-tech, while some are becoming entrepreneurs, like Akash. Agriculture continues to be a vital pillar of the Indian economy. The things we hear about, software companies and IT and all of, they are really not even a drop in the ocean of employment in India. So around half our workforce, slightly under, is still in agriculture. We have to focus on agriculture, making it viable and sustainable agriculture, which is, by the way, employment intensive. But we can only make them viable if we actually ensure that these activities are subsidized by the rest of the economy. And we should subsidize them because they matter to us. Discussions around job creation, employment tend to move into these kinds of, is manufacturing the solution to India's jobs problem? Is services the solution to India's job problem? Are exports the solution? We tend to think in these binaries or dichotomies, and it's not helpful because India is a very large and diverse economy. And so its strategies need to be very much more context-specific strategies. Everywhere we need all sectors to be part of the solution. So agriculture is going to be an important part of the employment solution as well. With India's population projected to reach 1.5 billion by 2030, engaging youth in agriculture is crucial for ensuring long-term food security. हम कैसे मास स्केल पे ले जाएं, कैसे हम बड़े स्केल पे पानी को रिचार्ज करें, उसके लिए हमने 3 मेथड्स तैयार की हैं। उन 3 मेथड्स को हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। सो पहली मेथड से Akash wants to revitalize India's agricultural sector. He's introducing innovations to make farms more productive and farming more appealing to young people. 31-year-old Vimal Gupta from Delhi had wanted to be an accountant. Having failed to land a job, his interest turned to farming. शहरों में पॉल्यूशन बहुत है, स्ट्रेस बहुत हो जाता है लोगों को, खाने के लिए अच्छा नहीं मिलता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जब मैंने देखी, और एवरीबडी इज़ सफरिंग, ऐसा नहीं है कि लोग सफ़र नहीं कर रहे हैं, बट दे हैव नो चॉइस, तो उन्हें वहीं रहना पड़ रहा है। तो ये भी एक रीज़न है फार्मिंग में आने का कि हम अच्छा खाना लोगों तक पहुँचाएँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दें, और उसी के लिए मैं आकाश जी के पास आया हूँ सीखने के लिए कि कैसे नेचुरल फार्मिंग के थ्रू हम आगे बढ़ें।
ये मोस्टली इंडिया में जो फार्मर्स हैं वो मोनोकल्चर में बिलीव करते हैं, मतलब वो एक वन क्रॉप एट अ टाइम। तो उसमें क्या होता है कि उसमें इतना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होता है। बट आकाश जी जो सिखा रहे हैं वो है मल्टी लेयर फार्मिंग, कि आप 1 एकड़ की लैंड पर ही 5 लेयर क्रॉपिंग कर सकते हैं, मतलब 5 लेयर्स को डाल सकते हैं। इससे आपका होता क्या है कि आपकी इनकम 4 टाइम्स बढ़ जाती है, विच मेक्स फार्मिंग प्रॉफिटेबल एक्चुअली, और कुछ ज़्यादा ही मतलब इनकम आपका जो है वो बढ़ जाता है। एक हेल्दी फूड किसी सोसाइटी तक लेके जाते हैं और निश्चित तौर पे उसको जब बेनिफिट्स होता है, उसकी बीमारियां ठीक होती हैं या वो बीमार होने से रुकता है, तो आपके अंदर से अपने आप सेटिस्फेक्शन आता है कि मैंने कुछ किया है। तो उन पर हमने काम करके इसमें काफ़ी पैसा लाने की कोशिश की है, और पैसा जहाँ पर आता है वहाँ पर ग्लैमर अपने आप आ जाता है, और उसकी वजह से पूरे देश दुनिया के नौजवान हमारे पास ये सब सीखने के लिए आते हैं। चना बीन रहे हो, पैक कर रहे हो इसको, हैं? Since launching his venture 16 years ago, Akash has trained more than 1 million farmers on the methods of multi-layer farming. With the majority of farmers in India aged 50 and older, Akash's work helps ensure continuity in India's agriculture sector, strengthening the country's food security. तो किसी भी देश की जो शक्ति होती है, जो ताकत होती है, वो युवा ही होते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय कृषि जो है ना, नौजवानों की ताकत को पुकार रही है कि वो आएँ और मिट्टी का कैंसर दूर करें, समाज का भी कैंसर दूर हो और हमारा भारत विषमुक्त हो। "32-year-old Raheel Salim wants to preserve his family's legacy. He's heir to a generations-old business specializing in the art of Pashmina weaving." तो जैसे हम बचपन में खेलते थे तो हम इन्हीं चीज़ों के साथ ज़्यादातर खेलते थे, जैसे कि लूम हो गया, कैसे बनाते थे हम भी नज़र रखते थे। तो धीरे धीरे हमें भी ये आ गया कि हम भी धीरे धीरे ये सीखने लगे इस काम को। पूरा कश्मीर इसी पे डिपेंड था, क्योंकि यहाँ पे सारा क्राफ्ट, जो भी क्राफ्ट हैंडमेड का बनता है वो सारा कश्मीर में बनता है। Growing up surrounded by the art of Pashmina weaving, Raheel witnessed the beauty of the craft and understood the challenges of the trade. और हम इसी के साथ वाबस्ता थे, तो हमें लगा कि ये हमारे लिए इजी होगा, तो हमने सेटअप किया कि हम भी इसी काम में आगे जाएंगे। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते गए तो आगे तो बहुत सारे चैलेंजेस आ गए, लेकिन धीरे धीरे हमने वो चैलेंजेस एक्सेप्ट किए, और फिर बाद में हमें लगा कि नहीं, ये काम उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे ये काम कम होता जा रहा है। इसकी मार्केट में डिमांड, जैसे कि फेक प्रोडक्ट्स आ गए, इसके मार्केट में डिमांड कम होने लगी इसकी। Now Raheel wants to revive the industry. He's creating new designs and leveraging the power of social media. देखिए, कोविड से पहले तो हम काम करते थे कि हम बनाते थे और डायरेक्ट कभी इनको बेचते थे, जो इनके आगे मिडल मैन्स हैं उनको बेचते थे आगे। तो कोविड में ऐसा हो गया कि ये सारा चेन ब्लॉक हो गया, न वो आ पाए न हम दे पाए उनको माल, और जो भी रॉ मटेरियल आता था वो सारा ब्लॉक हो गया, वो आना वाना बंद हो गया। तो कोविड के बाद हमने शुरू किया कि हमने सोचा कि थोड़ा बहुत ये हमने इसके साथ मोबाइल के साथ इसकी शूटिंग कर ली, थोड़ा बहुत खुद से वीडियोस बनाए और वो इंटरनेट पे प्रमोट कर दिए। थोड़ा बहुत तो बूस्ट अप हो गया उससे, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं हो गया कि जितना होना चाहिए था। लेकिन कस्टमर्स हमने थोड़े बहुत गेन किए, इंटरनेशनल मार्केट से भी हमने थोड़े बहुत कस्टमर्स गेन किए। Raheel's next goal is to create jobs for Kashmir's youth. The state has one of the highest unemployment rates in the country, with a quarter of its population unemployed. नहीं, जैसा कि आपको पता है कश्मीर में उतनी सारी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे उतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है कि यहाँ पे जॉब्स की उतनी सारी वैकेंसीज नहीं है। देखिए, हमारा काम है कि हम चाहते हैं कि नहीं, अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिले हमारे ज़रिए से, वो
ज़्यादा बेहतर है। देखिए हम चाहते हैं कि अगर एक लड़की कमा पाए तो उसकी वजह से एक पूरी सोसाइटी कमा रही है अभी। देखिए जैसे हम जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को कि हम यंग इनको काम दे रहे हैं यहाँ पे। To grow his business, Raheel launched a virtual store, enabling online sales to reach a broader customer base. But delivery vendors were unreliable and cash on delivery wasn't available. Until a new delivery startup came into the scene. तो फिर हमने फास्ट बीटल का नाम सुना था कहीं से, तो वो कर पा रहे थे, कैश ऑन डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे थे। तो हमने सोचा कि हम इनसे बात करते हैं। फिर हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमारा, तब से लेके हम उनसे काम करते हैं। Sheikh Sami Ullah and Abid Rashid are the brains behind Fast Beetle, a delivery service founded in Kashmir. The state's first startup to raise $1 million in equity-based funding. तो we saw कि यहाँ पे गैप है, मार्केट में नीड है, तो हमने सोचा क्यों ना हम एक कंपनी स्टार्ट करें जिससे हम अपने लोगों को हेल्प करें। When we saw that there were entrepreneurs who were not able to, they were able to sell online, but the problem was they were not able to deliver locally or anywhere in India. Their core business focuses on fulfilling orders for micro, small and medium enterprises operating in Kashmir. So we want to understand the problem कि क्यों नहीं ये कर पाती है from A to B। दूसरा चीज़ हमने देखा कि अगर एक बड़े कोरियर कंपनीज के पास जाती है, they are not entertaining her। क्यों नहीं वो entertain करते हैं? So many reasons। पहला कि आप बहुत small हो, अभी आपके पास उतना ऑर्डर वॉल्यूम है ही नहीं। हम एक ऑर्डर के लिए from A लोकेशन से from B लोकेशन तक हम नहीं आ सकते हैं। It is very difficult for us। So they were struggling। Leveraging their backgrounds in tech and operations, they developed a delivery system to close the gap between entrepreneurs and customers. As the business expanded, they developed specialized apps for delivery staff, businesses, and customers. They also made sure their systems were robust enough to operate on Kashmir's low network speeds and erratic connectivity. But हमारे दिमाग में ये भी thought था कि internet is a big challenge. What will we do? It was only 2G then. So we optimized our app in such a way that it would work flawlessly. That is still one of our USPs because अभी जो हमारी app है वो border areas में भी deliver करती है. It is the same USP that it is able to deliver there because हमने उसको optimize ऐसा किया है कि वो बहुत low internet speed पे चले. Even जो हमारी delivery app है, it works without internet. जो ही उसको फिर internet मिल जाता है वो sync हो जाता है. एंड प्लस द MSMEs, कहीं बारामूला में नॉर्थ कश्मीर या साउथ कश्मीर में उनको कंसेप्ट ही नहीं था दे कैन सेल ऑनलाइन एंड दे कैन डिलीवर. नाउ दे कैन एक्चुअली सेल ऑनलाइन एंड डिलीवर एंड दे आर ऑल्सो मेकिंग मनी. सो हमारा जो कंपनी का जो इम्पैक्ट है हम देखते हैं MSMEs पे फोकस करते हैं, उनको पुश करते हैं सो दैट दे कैन मेक मनी एंड ऑल्सो डिलीवरी राइडर्स सो दैट वी कैन डबल देयर इनकम. सो वी सी दैट ये जो है हमारे उनको हम आगे ले जाएं, एक तो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और प्लस इनको इकोनॉमिक जो है इनका इनकम डबल होता जाए. We really have to do something about our micro, small and medium enterprises. That's where most of our workers are. We need to make sure they get access to inputs, knowledge about the latest technology, training about that technology, basic infrastructure like, electricity all the time, basic transport facilities, all of the things which in most other countries you would take for granted. Kashmir's startup ecosystem is gaining momentum. Since the launch of the Jammu and Kashmir startup policy in 2018, over 84 startups have been established. The state has a target of nurturing at least 500 by 2028. Through their dreams and struggles, we witness a country balancing tradition and modernity. Despite the challenges of soaring unemployment, India's youth continue to push forward, their aspirations a testament to resilience and hope.
Their stories paint a vivid picture of a changing India, one where the old and new intertwine, shaping a future yet to be written.